So sound as a chapter was already there in your syllabus of class 9. And 9 में हम लोग obviously sound के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. And हम लोग क्या पढ़ा था वो हम लोग अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So we read that sound is a mechanical wave. Sound is a mechanical wave. Therefore, it needs a medium to propagate. The velocity of sound is equal to its frequency into its wavelength. And frequency क्या होता है? Frequency is the number of waves, the number of complete waves produced in 1 second. ठीक है? And wavelength क्या होता है? Length of one complete wave. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको साउंड का वेलोसिटी मिल जाएगा. Then we have sound obeys the laws of reflection. ठीक है? That again we have done in class 9. And number 4, there are two kinds of sound waves. A, longitudinal, and B, transverse waves. ठीक है? Please copy. So if you look at sound waves, there are two kinds of waves. Number one, as I said, is longitudinal waves. Longitudinal waves comprises of compressions and rarefactions. यानी एक जगह में वेव में पार्टिकल्स कंप्रेस कर जाते हैं एंड कुछ जगह में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. सो दैट्स अ rarefaction. The displacement of the particles is parallel to the direction of the sound. Sound जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी से पैरेलल होता है. यानी अगर if the sound is moving in this direction, the particle is going to vibrate to and fro in that direction only. ठीक है? We find transverse waves. We find, longitudinal waves in air and inside fluids. In air and inside fluids. ठीक है? So transverse waves में क्या होता है? अगर वेव ऐसा जा रहा है तो पार्टिकल को ऊपर और नीचे वाइब्रेट कराता है. So if the wave is in this direction, then the particle goes up, goes down and comes back to its mean position. ठीक है? So the particles displace in a direction perpendicular to the direction of the path of sound. ठीक है? The particles
displace in a direction perpendicular to the direction of sound. ठीक है? And the highest point where it goes is a crest, and the lowest point of that wave is a trough. ठीक है? And the gap between two consecutive crest or two consecutive trough is known as a wavelength. The gap between two consecutive crest or two consecutive trough is known as a wavelength. ठीक है? और यहां से यहां आपका एक साइकिल है. एक साइकिल का मतलब वन वेव. यानी जब आपका पार्टिकल एक बार ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस नीचे आया एंड देन वापस अपने मीन पोजीशन में आया, so that whole movement over time gives you a wave like this, and that's a transverse wave. Clear? Please draw the diagrams and write what is written. Okay, so we missed one property of sound: time period. Time period is one by the total frequency of the sound waves. And obviously time period का मतलब time है, तो वो seconds में होता है. What is time period? It is the total time taken to produce one complete wave. It's the total time taken to produce one complete wave. तो एक wave को पूरा बनाने में कितना time लगता है? That's a. Let's move on to the next part. So हम लोग echo के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है? So the first question that you are going to ask yourself is, what is an echo? ठीक है? Sound will always be reflected on striking a hard surface. ठीक है? साउंड हमेशा रिफ्लेक्ट होता है. अगर एक हार्ड सरफेस में साउंड स्ट्राइक करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. बट एको क्या है? एन एको is a distinct an echo is a distinct sound heard. डिस्टिंक्ट मतलब कि आप उसको दूसरे साउंड से अलग पहचान सकते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई इट डिफरेंटली फ्रॉम अनदर पीस ऑफ साउंड. सो इट्स अ डिस्टिंक्ट साउंड हर्ड आफ्टर reflection of the original sound. After reflection of the original sound. ठीक है? मतलब ओरिजिनल साउंड हो गया है, उसके बाद हमको अलग से एक साउंड सुनाई दे रहा है. ठीक है? So when we say distinct, so reflected sound may come to our ears, but we cannot differentiate it from the source. जो ओरिजिनल साउंड है
उससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्शन हो क्या रहा है? इवन इन दिस रूम दैट आई एम टॉकिंग देयर इज रिफ्लेक्शन हैपनिंग, बट द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड आर कमिंग ऑलमोस्ट टुगेदर। सो हम आवर ईयर्स, हम लोग का जो कान है, वो दोनों रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में फर्क नहीं बता पाता है। ठीक है, वी कैन हियर a distinct reflected sound, या distinct reflection of the sound only if it is heard 0.1 second after the original sound reaches the ear. तो ओरिजिनल साउंड आपके कान में आया एंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड के बाद आया, then we will be able to hear a very distinct echo. ठीक है, as sound persists in our ears for at least 0.1 second. in some cases ज्यादा भी होता है, बट हम लोग के कान में 0.1 सेकेंड एटलीस्ट रहेगा। वो साउंड का इम्पैक्ट, जो ओरिजिनल साउंड है उसका इम्पैक्ट, या फर्स्ट साउंड जो हम सुन रहे हैं उसका इम्पैक्ट 0.1 सेकेंड एटलीस्ट रहेगा। अब जब रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है वो 0.1 सेकेंड के बाद आ रहा है, तो हमको एको सुनाई देता है, यानी हम लोग ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में फर्क देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। बट अगर वो 0.1 सेकेंड के अंदर आया तो वो दोनों साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है एंड आपको लगता है कि इट्स हमिंग, यू फील अ हमिंग, रेवर्बरेशंस बोलते हैं हम लोग उसको। यू फील दैट द साउंड इज हमिंग, but you do not feel that the two sounds are completely separate sounds. If you go to an empty room and shout, you will find the reverberations happening because reflection हो रहा है but sound को कोई absorb नहीं कर पा रहा है. So in this room you'll find there's a lot of material that absorb the sound. All the materials on the chairs, they absorb sound, but the walls, any smooth surface, they will reflect sound, they will not absorb sound. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको खाली रूम में reverberation सुनाई देता है, where continuously the sound is getting reflected and coming to your ears, but they are not coming after 0.1 second. वो 0.1 सेकेंड के अंदर आ जा रहा है, तो एक साउंड दूसरे साउंड के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है. So, यहां हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं एक चीज, फॉर एन echo to be heard, the reflected sound should be heard at least 0.1 second after the original sound is heard. Otherwise, the two sounds, the original and the reflected one, the original and the reflected one, will overlap. And sometimes these overlapping sounds produce reverberations. They produce reverberations. ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए अभी नहीं लिख रहा. Let's move on. So जब एको का बात होता है, so the sound travels from the source to the reflecting surface,
and then it travels back from the reflecting surface to the place from where the sound is produced. तो ये distance d है, ये भी distance d है. Total distance traveled is 2d. Total time is t. Velocity will be 2d by t. Velocity क्या हो जाएगा? 2d by t. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2. ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Now generally the speed of sound in air is 340 meters per second. It is 340 meters per second. The minimum time required to hear an echo, यानी मेरा कान में ओरिजिनल साउंड से कितना देर बाद आना चाहिए echo? 0.1 second बाद आना चाहिए. So the minimum time to hear an echo is 0.1 second. So the total distance that you require to hear an echo is v into t by 2. Velocity of sound 340 है, into time which is 1 by 10. 0.1 second कितना होगा? 1 by 10 and 2. काटेंगे तो हमको 17 मिलेगा. So you need a minimum of 17 meters distance from the source and the reflecting surface to hear an echo. So हम लोग conclude करेंगे to hear an echo distinctly, we need a minimum of 17 meters distance between the source and the reflecting surface. Between the source and the reflecting surface. Reverberations. So as we have already discussed about reverberations, let us also learn about it. Reverberations are heard when reflection happens and reaches our ears under a tenth of a second. Then the effect produced in our ears is called reverberations. Clear?